तो ताइवान दौरे को लेकर जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है, सीधे आपको लिए चलते हैं। नैन्सी पेलोसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं ताइवान की राजधानी ताइपे में। To boost public confidence in the strength of our democracy as a foundation to our partnership with the United States. I told Speaker Pelosi that we are committed to maintaining the status quo across the strait. ताइवान जलडमरू मध्य के बीच में यथास्थिति बनाए रखने के लिए हमारी कोशिश है। आपकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ताइवान आते रहे हैं और ये हमारे संस्कृति में जो स्वागत की परंपरा है उसका निर्वहन। ताइवान हमेशा से सकारात्मक बातचीत के लिए का स्वागत करता है और हम इस इलाके में शांति चाहते हैं। Thank you very much, Madam President. And now I'm honored to give the floor to Speaker Pelosi to deliver her remarks. Thank you very much. Thank you very much, Madam President, for your leadership and for the leadership. मैडम राष्ट्रपति, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ आपके नेतृत्व के लिए भी। Delegation, we're almost like one unit. The chairman of the Foreign Affairs Committee, the chairman. मैं और मेरे साथ आया प्रतिनिधिमंडल हम करीब एक यूनिट हैं। मेरे साथ में यूएस कांग्रेस की फॉरेन रिलेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। Ways and Means, the Trade Committee, Congresswoman Susan Delbene, a member of the Intelligence Committee, Mr. Krishnamurthy. राजा कृष्णमूर्ति जो इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। Mr. Kim, I say that because when I speak, my receiving your kind words as well as this invitation is really received and appreciated by members of Congress. जब आप मेरा स्वागत करती हैं और मेरे बारे में जो कुछ बात कर रही हैं, वो एक तरीके से इस पूरे डेलीगेशन का जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए हैं और हम उसका आभार जताते हैं। Taiwan Relations Act was built in building a strong bond between our two countries, advancing our shared interests. हम दोनों देशों के रिश्तों के बीच में इस पूरे क्षेत्र के बीच में एक मजबूत रिश्ता है। हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। हम ताइवान की स्वतंत्रता और ताइवान का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी साझेदारी और मजबूत हो। Three areas that I just mentioned: security, economy, governance. सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस, ये तीन ऐसे पहलू हैं जिन पर हम खासा जोर देना चाहते हैं। In economy, we talk about a trade agreement that might be possible and soon. And in governance, among other things, and in governance, I want to salute Taiwan for the leadership you have provided in fighting. हम ताइवान को सलाम करते हैं उस जिस तरीके से आपने अपने यहाँ पर व्यवस्था को बनाया है, खड़ा रखा है। Vaccination, but also the lowest number of deaths from COVID, a real model. जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताइवान ने एक मिसाल खड़ी की, सबसे कम मौतें हुई, तेजी से टीकाकरण हुआ। Thank you for that, a lesson to all of us. And so as we deal with those three areas, we come here following the President's lead on the Indo-Pacific economic framework. That's interesting. राष्ट्रपति बाइडेन ने जिस तरीके से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की घोषणा की, जिस तरीके से हम सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर जोर देते हैं, build a different set with the economic package, with our security package and the trade agreement, hopefully that is imminent. So this is a very important time for us because we came here to listen and to learn about how we can do this more effectively, really achieving the यहाँ पर goals आने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम आपको सुन सकें और साथ ही ये पता लगा सकें कि किस तरीके से हम और प्रभावी तरीके से अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। As we do now because of this trip. So again, it's a great pride for us today, the first woman speaker in the House, meeting the first woman president of Taiwan. We have एक महिला स्पीकर ऑफ द हाउस और ताइवान की महिला राष्ट्रपति के बीच ये मुलाकात भी काफी अहम है। and I'm proud of my colleague Susan Delbene. So it's
they took a moment to take some pride in women's और हम leadership. इस क्षण पर गर्व कर सकते Our हैं। delegation came here हमारा to प्रतिनिधिमंडल send an यहाँ आया है unequivocal message. जो स्पष्ट रूप से America संदेश देना stands चाहता है with Taiwan. जो अमेरिका Thank you. ताइवान को देना चाहता है। Thank you very much, Your Honorable. Right now, with the permission of our President and Speaker Pelosi, we'll be taking up questions from the media. So we'll proceed right now taking the first questions from Taiwanese media, and it will be raised by Mr. Joseph Ye from CNA. Joseph? President Tsai, Madam Speaker, I'm Joe from the Central News Agency. I'm representing more than hundreds of Taiwanese media. I was given one question, so the question will be a little bit long, so please bear with me, because we have waited for 25 years for this chance. So you're the first House Speaker to visit Taiwan in 25 years, so do you foresee that your visit will bring up even more similar high senior official U.S. To visit Taiwan in the future, or maybe future 25 speakers? सालों में आप This is the first part ताइवान of the आने वाली question. पहली And हाउस the स्पीकर second part हैं। is, क्या ये माना जाए कि इसके बाद भी importance of और with जो Taiwan उच्च travel पदाधिकारी ban, हैं high अमेरिका के level वो ताइवान visit आते to रहेंगे, Beijing. इस तरीके के So, उच्च स्तरीय a lot यात्राएं of, होती रहेंगी। U.S. congressmen has proposed President Tsai to speak at U.S. Congress, if possible. Do you see that it could realize anytime soon in the near future, especially under your leadership in the House? कई बार इस And the तरीके की final बातें हुई हैं कि question is- राष्ट्रपति त्साई को अमेरिकी कांग्रेस में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाए, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये इस तरीके का क्षण जल्द ही आ सकता है? Military exercise and sanctions against Taiwan. Do you foresee that? Thank you. Well, first let me thank you for your questions on behalf of all of those other people, and to say that in terms of our visit here, and would that lead to other visits, I certainly hope so. But I think it's important to note that हमारी इस यात्रा members of और Congress, आने वाली यात्राओं के several of बारे में them मैं had इतना ही made कह trips सकती हूँ कि just earlier मैं this इसकी year. उम्मीद करती हूँ 5 senators, bipartisan, came, again including the chair of the Foreign Relations Committee, Mr. Menendez, came. Not too much of a fuss was made. Individual senators have made इसके पहले भी trips कई or सेनेटर plan और to कई make कांग्रेसमैन trips. आते रहे हैं। And, I सेनेट फॉरेन just रिलेशन hope, कमेटी के that, जो अध्यक्ष हैं वो भी आए it's हैं really इसके clear पहले। that while ये बात China ज़रूर है has कि उसको stood लेकर in the काफ़ी way हंगामा of Taiwan कई बार मचाया जाता है। participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way of people coming to Taiwan. It's जो a लोग show इस पर of आपत्ति friendship, उठाते of हैं support, उनको but ये also साफ a संदेश source of मिल जाना learning चाहिए about how कि we ऐसी can चीज़ों work से हम together रुकने वाले better नहीं हैं। in collaboration. So, I think that they made a big fuss because I'm speaker, I guess. I don't know if that was a reason मुझे or लगता an है कि excuse, because they didn't हंगामा say इसलिए भी anything खड़ा किया गया when the क्योंकि men मैं came. हाउस की स्पीकर हूँ। What the second part was, Invited to the U.S. Congress to make. oh, that was the third part, but I'll go there. Okay. Okay. That was the third part I thought. We haven't had a joint session in probably 3 years in Congress, partially because of COVID, but even before that it was Christmas and all that. So we haven't had many joint sessions. But we have tried कोरोना to के कारण accommodate पिछले काफ़ी visits, समय से हमारे by कोई bringing जॉइंट सेशन together, नहीं हुआ है। bring rather both sides of the aisle and both sides of the Capitol. And I would hope that that opportunity would be there. The joint session has become something, again, because of COVID, we aren't able to. It's even hard for us to do the President's State of the Union address, because you have to space and you have to time and, well, you know, here we are. I don't know, I think that whatever China was going to do, they will do in their own good time. What excuse they may use to do it is another thing, but you really know more about that than I do. I do think that it's really important for the message to be clear that in the Congress, House and Senate, Democrats and Republicans are committed to the
security of Taiwan. आगे संयुक्त सत्र में क्या होता है, किस तरीके से हम किसको आमंत्रित कर पाते हैं, तो बाद में तय होगा, लेकिन कम से कम ये साफ हो जाना चाहिए कि सेनेट हो या कांग्रेस हो या फिर रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, हम ताइवान के साथ हैं. And whether it's certain insecurities on the part of the president of China as to his own political situation that he's rattling a saber, I don't know. But it doesn't really matter. What matters to us is that we salute the successes of Taiwan. We work together for the security of Taiwan, and we just take great lessons from the democracy in Taiwan. Thank you very much, Madam Speaker. Right now, we take questions from the international media, and I would like to invite Samson Ellis. He is the Taipei Bureau Chief of Bloomberg News. Samson? Oh, thank you. Madam President, Madam Speaker, we have seen the Chinese authorities take multiple economic actions against individual Taiwanese companies and entire sectors of the economy here. Taiwan has already paid a cost for your visit and is likely to continue to do so over the coming days and weeks. हमने देखा है कि किस तरीके से ताइवान और के लोगों और उनकी कंपनियों के खिलाफ चीन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. आपकी इस यात्रा की कीमत ताइवान ने चुकाना शुरू कर दिया है. In recognition of our common interest economically, we just passed the Chips and Science Act. This is something that opens the door for us to again have good, better economic exchanges. ताइवान और अमेरिका के बीच में मजबूत रिश्ते हैं. जिस तरीके से हमने अभी चिप्स एंड साइंस एक्ट पास किया है, इस बिल के पारित होने के बाद में संभावनाओं के और नए दरवाजे खुलेंगे. Ingenuity, the entrepreneurial spirit, the brain power, whatever, the intellectual resource that exists in Taiwan and the success ताइवान में जो बौद्धिक of the क्षमता tech और जो industry उसकी here उद्यमिता है, for one sector has been really a model, and again we want अपने आप to में increase our relationship. So I think that प्रशंसनीय I है. would be saying that would be a goal we share, but with the CHIPS Act, we're really facilitating reaching that goal, and to it's pretty exciting. It's pretty exciting, and I think that you will see. मुझे लगता है कि चिप्स और साइंस एक्ट के recognition बाद of the scientific काफ़ी success, जो that उज्जवल Taiwan संभावनाएं has हैं had, वो ताइवान के लिए भी being होंगी, हमारी आर्थिक साझेदारी के लिए भी होंगे, और for how we go forward. That's why our bill is called हम आर्थिक साझेदारी का एक मॉडल and science. बना पाएंगे. Thank you very much, Madam Speaker. Right now, last but not the least, we will have a representative from the Japanese media, Mr. Ishiro Koichiro-san. He is the bureau chief of Asahi Shimbun of Japan. Hello. にはおぞんとん。 Konnichiwa. Hello, Speaker Pelosi. Konnichiwa. Thank you very much for taking my questions. My question is about the Chinese democracy. Now we are witnessing the Chinese authorities increasing various pressures, not only to Taiwanese people and Hong Kongese, but to their own citizens, I mean the Chinese people. And as a strong and long-time advocate चीन of जिस तरीके से democracy, लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है, चाहे हांगकांग का मामला हो, चाहे ताइवान का मामला हो, और यहाँ तक कि चीन के भीतर भी जो लोग लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जा can रही है, deter China from invading Taiwan militarily. क्या अमेरिका And how we चीन can को guide ताइवान पर आक्रमण China करने towards और अतिक्रमण democratic करने से रोकने के लिए political सैन्य कदम system. उठाने के लिए तैयार है? Thank you. Well, two things. In the context, your question comes in the context of right now a struggle between autocracy and democracy in the world. आपका सवाल एक संदर्भ में है जिसके अंदर तानाशाही और लोकतंत्र के बीच टकराव है. Money and whatever into many countries in order to get their support at the UN and other bodies, we have to recognize that has some effectiveness because it's a lot of money and it's promises that may or may not ever be kept. So when we talk about Taiwan in that context, we have to talk from strength
जब हम ताइवान के बारे में बात करते हैं तो हमें शक्ति के साथ बात करना चाहती हैं जो जिस तरीके से ताइवान एक तकनीकी ताकत के तौर पर भी खड़ा हुआ है, हमें दुनिया को ये दिखाना होगा किस तरीके से ताइवान के लोगों ने साहस से सफलता का रास्ता तय किया है। उन्होंने अपने देश को किस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में तब्दील किया है, किस तरीके से और लोकतंत्र बढ़ाया और इस पूरे क्षेत्र में ताइवान एक मॉडल है। ताकत, शक्ति और साख, ये वो चीजें हैं जिससे ताइवान और मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है और साथ ही ये एक मजबूत विरोधाभास खड़ा करता है जो कुछ चीन के भीतर हो रहा है, क्योंकि एक देश और दो व्यवस्था की बात हांगकांग के संदर्भ में जिस तरीके से उन्होंने की, क्या हो रहा है ये सबको पता है। Our Taiwan Relations Act, we support the communiques, this, that, and the other thing that have gone before. So we're supporters of the status quo and the rest. We don't want anything to happen to Taiwan by force. So हम नहीं चाहते कि ताकत के बल पर ताइवान में कुछ भी कोई करने की कोशिश करे, क्योंकि ताइवान की ताकत उसका लोकतंत्र है। In our earliest days of our founding of our country, Benjamin Franklin presidency said, freedom. राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र, security here. If we don't have, we can't have either if we don't have both. और सुरक्षा, तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र अगर नहीं होंगे तो सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो सकती। And again, they're all, and governance, they're all related, and we want Taiwan to always have freedom with security. और हम हमेशा चाहते हैं कि ताइवान के पास स्वतंत्रता भी रहे और सुरक्षा भी। Thank you very much. Okay. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Today's event is especially important because we are witnessing the historical visit of Speaker Pelosi to Taiwan to convey the message of the U.S. support to Taiwan. So we know, in a challenging time like this, Taiwan is not alone. We also would like to thank very especially to President Ing-wen for her leadership, her resilience, strength, and wisdom shown in leading Taiwan. Also, our sincere appreciation goes to the distinguished members of the U.S. Congress who accompanied Speaker Pelosi in her trip. And your friendship means a lot to us. Thank you so much for being here in Taiwan. Also, thanks for the presence of so many officials from the U.S. side, from the Taiwan side, whose effort made this event possible. Thank you also very much to the media friends with us today, and also hundreds right now watching the live transmission. Thank you very much to you all. Have a great day. तो आप सुन रहे थे स्पीकर नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और किस तरीके से नैन्सी पेलोसी ने सीधे सीधे संदेश दिया कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और चीन की तमाम गिदड़भपकियों और चीन की तमाम चेतावनियों के बावजूद अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि वो ताइवान के साथ खड़ा होने के लिए, खतरा भी मोल लेने के लिए तैयार है। और जो स्पष्ट संदेश दिया है नैन्सी पेलोसी ने अपनी इस यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमेशा चाहेगा कि ताइवान के पास स्वतंत्रता भी रहे और सुरक्षा भी रहे। साथ ही अगर ताकत के जोर पर ताइवान में कुछ बदलाव करने की कोशिश की जाती है, उसकी हदें बदलने की कोशिश की जाती है, तो अमेरिका उसका सख्त विरोध करेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने चीन को साफ साफ संदेश दे दिया है ताइवान की धरती से, जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी की यह यात्रा हुई, चीन की तमाम चेतावनियों और चीन की तरफ से आए बयानों को दरकिनार करते हुए अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर नेता की यह यात्रा बहुत सारे संदेश देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।